Russia's media, at first silent about the invasion, is now beginning to give insights into operations in Ukraine. Inevitably, their coverage features advances by them and Ukrainian reverses. And indeed, there have been. कीव में कहर मचा है। एक तरफ बर्फबारी तो दूसरी तरफ बमबारी की दोहरी मार पड़ रही है। بالإعدام شنقا حتى الموت الارتكاب العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليس بدلالة المادة 12 أولا. Why did the U.S. go to war in Iraq? In the early stages of military operations. Growing up, the narrative was always oil. So it's like we went to Iraq to get oil, like America always does. We might find ourselves without adequate supplies of energy in the future. All major oil fields. Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы. Why are you doing this? Why are you fighting this needless war? This war of conquest that will topple so many lives. He sent his forces, his missiles, in the middle of the night. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाई और प्यारी बहनें, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहा हूँ, एक्चुअली जो अभी का जो हालात है हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के वार को लेकर, पूरी दुनिया बड़ा डरी सी हुई है, सहमी हुई सी है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, पूरी दुनिया इस वार में इन्वॉल्व ना हो जाए। थर्ड वर्ल्ड वार होता है या नहीं होता है ये तो एक अलग सी बात है, लेकिन इससे होने वाले प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारी दुनिया को सफ़र करना पड़ेगा। चूँकि महंगाई बहुत होने जा रही है, तेल का दाम बढ़ गया है, गैस का दाम बढ़ गया है। कहने का मतलब ये है कि जंग जो हमारा जो चाहे इससे पहले जंग हुई तेल के मामले को लेके या फला हो, चाहे जंग ये इराक़ में हुई, चाहे जंग अफ़गानिस्तान में हुई, लीबिया में हुई, सीरिया में हुई, इसका बेनिफिट किसको जाता है ये तो अलग सी बात है, लेकिन इसके नुकसान एक ऑर्डिनरी एक नॉर्मल सिविलियन भुगतते हैं, या हमारी फ़ौजें मरती हैं या एक नॉर्मल सिविलियन मरते हैं। उसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, अपने माँ हैं, बेटे को खो रहे हैं, कोई भाई को खो रहा है, कोई बहन को खो रहा है, कोई शौहर को खो रहा है, कोई अपने बच्चों को खो रहा है। ये दुनिया को समझना चाहिए कि जंग से कुछ चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। और द टाइम बिंग के लिए आप उस चीज़ को गेन तो कर लेते हैं, लेकिन हर चीज़ परमानेंट नहीं है। ये दुनिया परमानेंट नहीं है, इस बात को हमको आज समझना पड़ेगा, चाहे जो भी हम कर लें। पहले के लोगों ने जो जंगें की, क्या आज वो हैं इस दुनिया में? नहीं है, इतिहास गवाह है। फ़िरौन ऐसा बादशाह आज ख़त्म हो गया, बड़े बड़े बादशाह गुज़र गए। बेहतर ये है कि हम किसी भी जंग में जाएं, अच्छा हम लोग के लिए यही है कि हम लोग जंग से दूर रहें और एक भाईचारा और कोई भी मसले का हल हम लोग टेबल टॉक से बैठ करके आपस में डिस्कशंस और उस चीज़ को कम कर सकते हैं, ना कि हम किसी जंग का हिस्सा बन करके। आज हर जगह जंग का माहौल है, हर लोग डरे हुए हैं। यूक्रेन में बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, नॉर्मल सिविलियन मर रहे हैं। कोई पॉलिटिशियंस नहीं मरता है इसमें। बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसको प्लान करते हैं, इस तरह की जंगों को। वो आराम से अपनी जगह पे बैठे होते हैं, लेकिन मरते हैं हम जैसे सिविलियन, हमारी फ़ौजें मरती हैं। तो इसी पे मुझे बोलना था। तो हम लोग को कोशिश यही करनी चाहिए मेरे भाई, हमारी हर गवर्नमेंट से, चाहे दुनिया की जो भी गवर्नमेंट है, उसे यही एक पैगाम है या रिक्वेस्ट है जो हम दे सकते हैं एक ऑर्डिनरी सिविलियन होने के नाते, कि हमें जंग से दूर रहना चाहिए और एक आपस में एक भाईचारगी के साथ हमें इस दुनिया में रहें। यही हमारे लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन मर के वापस जाना है, तो हम क्यों कुछ दिनों के लिए ये सारे फसाद को खड़ा करते हैं। उम्मीद है हमारा ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। आपसे गुजारिश है, जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी सजेशंस, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। Среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы. Why are you doing this? Why are you fighting this needless war? Ну и родственники. This war of conquest that will topple so many lives. Жители юго-западных исторических. He sent his forces, his missiles, in the middle of the night.
These are the troops, hundreds of thousands of them, that had been camped out on the border for months. Troops that Putin had insisted were there for a routine military exercise. कीव में कहर मचा है। एक तरफ बर्फबारी तो दूसरी तरफ बमबारी की दोहरी मार पड़ रही है। रूसी आक्रमण को झेलने के लिए फिर भी न्यूज नेशन के एक और रिपोर्टर मधुरेंद्र जान हथेली पर लेकर बैटल ग्राउंड में डटे हुए हैं। हम दिखा रहे हैं आपको कीव के इस वक्त के हालात की कीव किस तरह से तैयार है रूसी आक्रमण को झेलने के लिए, और हम बिल्कुल इस वक्त खड़े हैं कीव के उस पॉइंट पर जहां तैयारी की गई है कि रूसी आक्रमण जब ऑन फुट। मधुरेंद्र और पिराज कीव से करीब 30 किलोमीटर का सफर तय कर इरपिन पहुंचे। ये बॉर्डर इलाका है जहां से कुछ दूरी पर रूसी सेना मोर्चे पर है और कीव पर कब्जा के लिए वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को बसों या दूसरे वाहनों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मानवीय त्रासदी के रूप में सामने आया है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हजारों हजार लोग इरपिन छोड़कर कीव और वहां से लीव की तरफ जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। ये वही बॉर्डर के उस पार रूसी सेना डटी है तो बॉर्डर के इस पार यूक्रेन की सेना उनसे न सिर्फ लोहा ले रही है बल्कि पिछले 14 दिनों से रूसी सेना को इरपिन के पास ही रोके रखी है। यहाँ जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, सड़कों पर दूर दूर तक बुलेट्स बिछी है। ऐसे जंगी हालात। Russia's media, at first silent about the invasion, is now beginning to give insights into operations in Ukraine. Inevitably, their coverage features advances by them and Ukrainian reverses. And indeed, there have been Russian advances. But these have been slowed in many places, revealing an army struggling to make progress. President Zelensky appeared on TV, not just to talk to his people, but to speak directly to Russians themselves. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. We share a border of over 2,000 kilometers, and along this border, your troops are stationed, almost 200,000 soldiers. Your leaders just approved them to make a step towards us, into the territory of another country. И этот шаг. This step is likely the beginning of a massive war on the European continent. Russia again warned its nuclear forces were on high alert. Why did the US go to war in Iraq? In the early stages of military operations. Growing up, the narrative was always oil. So it was like we went to Iraq to get oil, like America always does. We might find ourselves without adequate supplies of energy in the future. All major oil fields in the south are now under coalition control. Quite it. Oil's a part of it, but it's not the main reason. We went to war in Iraq because several powerful American men wanted to. Some of them thought it was vital. We had to. Others just wanted to project American power. But either way, here we are 18 years later. Nearly 10,000 Americans dead, over 200,000 Iraqis dead, over $1 trillion tax dollars spent. And the result? A Middle East that is less stable than ever, in part because of the US presence, and really because of it. How did this happen? I mean, I grew up and lived through this. I studied it as an undergrad, I studied it in grad school, and yet it's taken me until now to really take a hard look and to really understand exactly what happened. So this is how the US stole Iraq. Saddam Hussein is a tyrant, a murderer, and a man who has started 2 wars. He is clearly some... 9/11, the country is reeling. Who did this terrible thing and why? How should the US respond? And it became clear very soon amongst intelligence and counterterrorism people that Al-Qaeda was behind it. This terrorist group that was mainly based in Afghanistan. Later that night, the night of 9/11, over at the Pentagon, which earlier that day had been hit by an airplane, a memo comes in from the Deputy Secretary of State. The memo is urgent. It's for the Defense Intelligence Agency, the people who spend their time doing all the intelligence for war and other defense purposes. And this memo tells the intelligence agents not to look into Al-Qaeda, the people they know did it, but instead to look into ways Iraq has been involved in terrorism for the previous decade. The intelligence agents who got this memo sort of scratched their head and were like, wait, what? What's going on here? These people were very familiar with the intel, and they knew that this attack had come from Al-Qaeda in Afghanistan. Afghanistan is like more than 1,000 kilometers away from Iraq. It is a completely different place. They speak a different language. It has nothing to do with Iraq. Afghanistan and Iraq are totally different. We had Paul Wolfowitz, this time with the support of his boss, Secretary of Defense Donald Rumsfeld. So Wolfowitz pipes up and he's like, you know, 9/11 was a pretty sophisticated attack. There's no way that this ragtag terror group of Al-Qaeda could have pulled it off all alone. They probably had help from Saddam in Iraq. And then Wolfowitz says that when it comes to global terrorism, Saddam is actually the head of the snake. He actually said that, basically saying that Saddam is behind all of this. And everyone in the room is sort of like,
What the hell is this guy talking about? Saddam Hussein is a really bad guy, but he's not the head of the snake of international terrorism. Like, what? All these people, these like very informed international like advisors. Oh man. After some... Welcome to the Clever Line YouTube channel. You know Saddam Hussein, the former president of Iraq. I wanted to share with you what he said before he died. There may be new videos about this in the future. See you. بالإعدام شنقا حتى الموت الارتكاب الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولاً أليف بدلالة المادة 12 أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً من قانون المحكمة الجنائية العراقية الكلية رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 أليف من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1900